Hello everyone. So this is our ninth lecture on social issues. I hope all of you are doing well. In this lecture, we will be taking up your first topic from your Indian society syllabus, that is called as the salient features of Indian society. Okay, so this is the first topic in your Indian society syllabus, GS paper 1. So we will be discussing about that because we are part of an Indian society only. So I hope that each one of you must be having a little bit of fair idea about what Indian society is like. We keep listening that in our society we have values for values such as secularism. We follow values like tolerance and compassion towards each other. So these are some values which are there, which are inherent in our society. Then we have certain values which are very much inclined towards family. Our family values are considered to be very much sacred, and they are very different from the kind of family values in the West. So because Indian society is having its own distinct culture and cultural identity, and we see that there is so much diversity as far as India is concerned, in terms of castes, the religious belief systems, the number of ethnicity, the various tribal groups and everything. So there are a lot of cultural diversity and religious diversity which is present in India. But apart from all that diversity, there is a spirit which holds India together. There is a spirit which holds Indian society together, and that spirit is called as unity in diversity. Okay, that is, though we are having so many different cultural values, though we are having so many distinct religious beliefs and so many different castes, so many different ethnic identity people, different tribal people living in this country, but there is a string that holds everything together, and there are certain values which are intrinsic to all the different religious groups people, whether you are belonging to any social group. But if you are belonging to India, then there is a sense of Indianness in each one of these groups. They may be separated by any kind of diverse nature. Okay, they may be separated by any kind of diverse understanding or diverse identities they may be having. There will be differences in opinion and everything. The lifestyle which the different social groups are leading, that may also be different. You can see a lot of diversity even between two different states. Like for example, if you compare the northern India with southern India, there's a lot of different variation and differences in their social and cultural beliefs as far as the north and southern India are concerned. But still, there is one thread which holds all of the India together, and that sense of Indianness, that even you are having your own regional identity, you are following your own cultural practices, you are following your own religious beliefs in this country, but in the end you belong to this one country which is called India, and you are part of a larger society which is the Indian society as a whole. Whether you may belong to any smaller social group, but in the end you are belonging to a larger identity which is the Indian identity. Okay, and there are many values which are present in all the religious groups people, all the social groups. Whether you belong to any social group, there are certain common values which are binding all of us. There are certain social values in our society which are derived from what? Which are derived from this Constitution of India, because there is single constitution for the entire territory of India. It's not that the different states having different cultural practices or different cultural identities, they have their own constitutions. No, we are all guided by one supreme law of the land, which is our constitution, and there are a lot of values which have we have derived from that constitution. And that is why, even though there is so much diversity, but there is a sense of uniformity also. There are certain common values which are common to all the social groups which are living in this country. All of us share certain values which are common to all of us, and that is what is binding us in the form of one integrated Indian society. Okay, so to begin with the features of Indian society, you must know what is a society to start with. So what is a society to start with? Just give me 1 minute. I'll change the color of the highlighter pen so that it is more visible to you.
So what is a society? Society is as per sociologist, because society को कौन study करता है? Sociologist study करते हैं. It is an aggregation or sum of all the human relations which are based on some common characteristics, traditions and norms. So it's a sum of all the human relations, but they are based on some common characteristics. Like कुछ कॉमन ट्रेडिशंस पे बेस्ड होंगे तो वो एक पार्ट है सोसाइटी का, कुछ कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो वो एक पार्ट है सोसाइटी का. Now society can be a homogeneous society also, like for example Arab nation, Japan. ठीक है, जापान में जैसे आप कंट्री में हो तो वहाँ पे आप सारे मोस्टली एक रिलीजन ही फॉलो कर रहे हैं. अरब नेशन में आप हो तो ऑल द पीपल आर following one same religion, which is the religion of Islam. So that is a kind of a homogeneous society जहाँ पे जो आपकी cultural या religious identity as a whole same है. ठीक है, और इट कुड बी अ हेट्रोजेनस सोसाइटी, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया का अपना एक कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारा कि हमारा ऑफिशियल रिलीजन हिंदुइज्म है या हमारा ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है. हमारा ऐसा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है एज कम्पेयर्ड टू अरब नेशन. सो लाइक फॉर एग्जांपल जापान में उनका एक सेपरेट एक अपना एक ऑफिशियल रिलीजन है, वैसा हमारे केस में नहीं है. यूएस हो गया, यूएस इज ऑल्सो हेट्रोजेनस सोसाइटी. पीपल फ्रॉम वेरियस castes and religious beliefs are living and following different characteristics, traditions, norms and values are living in US. Okay, so what is society? Sum of all the human relations which is based on some common characteristic, tradition, norms and values. Like for example अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी एज अ होल दो कितनी भी डाइवर्स हो बट इट विल शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, सम कॉमन ट्रेडिशंस. वी आर फॉलोइंग ईच एंड एवरी इंडियन is following certain common traditions, norms and values all throughout the country. Okay, so that is a society, that is certain common characteristics, tradition, norms and values which are binding you and which are, that is actually your unique Indian identity, that is forming part of your unique Indian identity. So every society has got its own unique identical value. Okay, so heterogeneous society is based on the elements of diversity. Practically no well-developed society across the world, it can be called as a homogeneous, as some form of difference do exist in all of them. So ये जो concept है एक homogeneous society का कि just on the basis of religion, if you are calling any society as a homogeneous society, that won't be a fair study of that particular group, because some form of diversity or heterogeneity will be there. Okay, so now we will break down the key words. Okay, like social group क्या होता है, you need to understand. If you have to understand society, you need to understand what social group is and what is the significance of territory, what is the significance of interaction and culture for better understanding. So what is a social group? It is a coming together of two or more people who interact and they further identify with one another. Territory का meaning सबको पता है, but what does territory denote in the society? So every country owns formal boundaries and territory or areas that the world recognizes as belonging to the respective countries. Every country has got its own formal boundaries and territories. But a society's boundaries don't necessarily have to be only geopolitical borders. Society's boundaries don't necessarily have to be only geopolitical borders. They could be any kind of a border. So कोई भी एक formal boundary territorial जो areas होते हैं belong to any respective country is called as territory. Okay, interaction means the members of any society, they must come in contact with each other. Okay, and if one group of individuals within a country will have no regular contact with another group, then those groups cannot be considered part of the same society. So only then, if you share the same tradition, norms and values and characteristics, you will be called as you are belonging to the same society. Until and unless you are not following the same tradition, norms and characteristics, how can you be called part of the same society? And for sharing the same characteristics, tradition, norms and values, obviously there has to be certain level of interaction between two groups of people. So that is the significance of interaction over here. It could be interaction in any form. Okay, now salient features of Indian society, we would study that what are the salient features of Indian society as a whole. That as a whole, Indian society is an exemplification of multicultural, multi-ethnic and multi-ideological constructs. That means, and first of all you have to understand that though we are a multicultural society, multi-ethnic, बहुत सारे ethnic identities हैं हमारे country में, बहुत सारे different ideological constructs हैं, बहुत सारे ideologies हम follow करते हैं इंडिया में. अन्य सारे जितने भी आइडियोलॉजीज हैं या कल्चर्स हैं या मल्टी एथनिक जो सोसाइटीज़ हैं, ये सारे को एग्जिस्ट कर रहे हैं इन हार्मनी विद ईच अदर.
in harmony with each other. All these different people belonging to various cultures, ethnicity and ideological constructs are living together, that is they are coexisting in harmony with each other at once to strike harmony and also to retain its individuality. So the thing is that in Indian society we have somehow maintained a very fine balance between your cultural, ethnic, or any kind of ideological identity, and between the kind of harmony that you have to maintain among with each other. It doesn't mean that if you are belonging to different cultural groups or ethnic groups or ideological group, then you cannot live in harmony with each other. You can maintain your individuality by following your culture in the best possible way, by enhancing your cultural identity in best possible way, by working for the welfare of your community in best possible way. But that doesn't mean that you cannot live in harmony with people belonging to other cultures or other ethnicities or other ideological constructs. So basically Indian society is an exemplification of how different cultural groups, different ethnic groups, different people belonging from various ideological constructs are coexisting in harmony with each other, and at the same time they are also maintaining their individuality. Okay, so what is the characteristics in a society? Multi-ethnic, multilingual society means there are people belonging to so many different languages. More than 22 official languages are recognized in our constitution itself. Apart from there are a lot of sub variants of different languages which are spoken in different section of our society. Okay, there are multi class society also. ठीक है, एक आपका हायर क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है, लोअर क्लास होता है, उसमें भी बहुत सारे सब क्लासेस डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन दे परफॉर्म. सो देयर इज इट्स अ मल्टी क्लास सोसाइटी. पेट्रियार्कल सोसाइटी है एज अ होल. देखा जाए तो अगर हम इंडियन सोसाइटी को डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन फॉर अ unique Indian society, then you cannot miss on the point, you cannot miss the realistic factors. एक तो हो गया कि हाँ सिर्फ हम तारीफ कर रहे हैं अपने कंट्री की, but you cannot miss on the realistic factors that we as a whole are a patriarchal society. कहीं ना कहीं though the status of women have improved a lot, जो रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशंस आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, उसमें आपको पता चलेगा कि वी हैव इम्प्रूव्ड आवर स्टेटस अ लॉट. अगर हम बात करें रोल ऑफ विमेन बहुत इम्प्रूव हुआ है. बहुत सारे विमेन के पॉलिटिकल एंड उनको सोशल राइट्स हमने दिए हैं, इक्वालिटी प्रोवाइड करी है विमेन को एट पार विद द मेन. बट देर इज स्टिल अ मेजर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी विच हैज़ got patriarchal views. Patriarchal views means male dominated views. So what is patriarchal society? Patriarchal society वो होती है जो मेल डोमिनेंस में बिलीव करती है, कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंस में बिलीव करती है. तो अभी क्या है, हमने बहुत लेवल तक इक्वालिटी प्रोवाइड कर दी है विमेन को, एंड देर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स जहाँ पे एक तरीके की इक्वालिटी डेवलप हो चुकी है मैन एंड विमेन के बीच में. बट देर आर स्टिल lot of major section of our population still believes in the patriarchal setup of the society. Okay, and unity in diversity is also one feature of the Indian society, and we have discussed even in the first slide also that what is the importance of unity in diversity. That though you may be belonging to one society, if you have got the same tradition, characteristics, norms and values. Apart from that, there may be different social groups who are forming part of a society, but apart from the various different cultural thing you might have or ethnicity, still we are having a kind of oneness in our country, that the Indian identity is much better, or Indian identity is much superior to your regional identity. So you have got that spirit of unity in diversity in this country. Okay, then what are the other features of Indian society? That Indian society is dynamic and syncretic at the same time. So what is dynamic and syncretic? Present Indian society is a culmination of long drawn process involving both assimilation and accommodation. We know that in our country various social groups or various groups or communities of people have migrated into our country from outside. Like from time immemorial, जब से भी आप Indian history को उठाकर देखते हो कि even if you pick up ancient history, medieval history, modern history, हमेशा हमने देखा है कि हमारे कंट्रीज में आउटसाइड इन्फ्लुएंस बहुत रहा है, एंड बाहर से लोग, बहुत सारे एशियन लोग एंड इवन पीपल फ्रॉम यूरोप हैव केम एंड दे गॉट एसिमुलेटेड एंड अकोमोडेटेड इन द इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी. तो ये जो इंडियन सोसाइटी है is a culmination of all that assimilation and accommodation that has taken place since the time immemorial.
Many tribes have over the years they have also lost their indigenous culture as a result of that assimilation into the Hindu society. Many new practices have emerged from the contact of different cultures. क्योंकि हमारे इंडिया में कोई भी एक आप ऐसे नहीं कह सकते कि यूनिक इंडियन कल्चर है, कोई इंडिजिनस कल्चर है. इंडिजिनस जो कल्चर होता है वो नॉर्मली जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी अपने कल्चर को अफेक्ट नहीं होने दिया आउटसाइड इन्फ्लुएंस से, उनका ही सिर्फ एक जो कल्चर आइडेंटिटी होता है वो इंडिजिनस होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी कल्चरल आइडेंटिटी इंडिया में हैं दे आर अ काइंड ऑफ अ मिक्स और हाइब्रिड कल्चरल आइडेंटिटीज, बिकॉज दे हैव in any period of time they have come under the influence of some outside cultural influence. Okay, it is also dynamic at the same time since it is ever changing. So Indian society के जो characteristics हैं they are not static, वो टाइम के साथ इवॉल्व होते रहते हैं, टाइम के साथ इवॉल्व होते रहते हैं खुद को. जो इंडियन सोसाइटी के डिफरेंट नॉर्म्स या वैल्यूज़ हैं वो खुद का टाइम के साथ इवॉल्व होते रहते हैं. और एसिमिलेशन और अकोमोडेशन जो फीचर है एक इंडियन सोसाइटी का कि हम सारे डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज़ को, इवन जो बाहर के उनको भी हम असिमिलेट कर लेते हैं, अकोमोडेट कर लेते हैं अपने कल्चरल वैल्यूज़ में. तो दैट इज़ वाई ऑल्सो यू कैन से दैट इट्स अ डायनेमिक सोसाइटी, इट इज़ चेंजिंग विथ टाइम, इट इज़ नॉट स्टैटिक. द रीसेंट एग्जाम्पल जो है इंडियन सोसाइटी का इज ऑफ इट्स चेंजेस in the social values after globalization. So we know that after globalization, जो कि हमने previous lecture में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि ये जो इंटरचेंज इंटरकनेक्टेडनेस है बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड जो फ्लो हुआ है पीपल का एंड यू नो गुड्स एंड सर्विसेज का एंड आइडियाज़ का, टेक्नोलॉजी का जो फ्लो हुआ है बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, उसकी वजह से जो हमारे कंट्री में कितना वेस्टर्नाइजेशन हुआ है एंड कितना ज़्यादा चेंजेस हुए हैं इन द सोसाइटी एंड द सोशल वैल्यूज़ आफ्टर ग्लोबलाइजेशन के, कि हमने कैसे हमारे जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो अफेक्ट हुए हैं, हमारे लाइफस्टाइल वैल्यूज़ अफेक्ट हुए हैं, हमारे जो टेस्ट है म्यूज़िक का, क्यूजीन का और बाकी चेंजेस जितने भी हमने अपने वैल्यूज़ में देखे हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो ये जो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसके बाद से ज़्यादा हमारी कंट्री में हमें देखने को मिल रहे हैं चेंजेस which have happened as a result of globalization. So it's an example of how ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे कंट्री में इतना एसिमिलेशन या अकोमोडेशन हुआ है बाहर के कल्चर्स का समहाउ. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ग्लोबलाइजेशन का. ग्लोबलाइजेशन का एक आफ्टर इफेक्ट अर्बनाइजेशन भी है. ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो अर्बनाइजेशन इज सच अ मेजर चेंज इन एनी सोसाइटी. सो यू कैन अंडरस्टैंड द इफेक्ट कि किस लेवल तक असिमिलेशन या अकोमोडेशन होता है हमारी कंट्री में बाहर के कल्चरल वैल्यूज़ का. ठीक है, so the one example of that is globalization, the changes that have happened in our society due to globalization. Now what are example of assimilation? You can say, because if you are studying anything you must have clarity about that concept कि अगर आपने assimilation पढ़ लिया तो ऐसे ही नहीं आपको assimilation पढ़ लेना कि उसका आपको मीनिंग ना पता हो एग्जैक्टली क्या है. तो व्हाट इज assimilation आप उसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि अबाउट 197 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स आर एंडेंजर्ड इन इंडिया. ओके, इससे आप समझ सकते हो कि एसिमिलेशन हुआ है कहीं ना कहीं बाहर का कल्चर एसिमिलेट करने के चक्कर में हमने अपनी जो रीजनल लैंग्वेजेस थी इंडिया की उनका ही कहीं ना कहीं एंडेंजर कर दिया उसको. तो उससे ये पता चलता है कि कितना आउटसाइड इन्फ्लुएंस है हमारी सोसाइटी में. ठीक है, स्ट्रगल ऑफ मैनी ट्राइब्स सच एज नागा फॉर प्रोटेक्टिंग देयर कल्चर फ्रॉम आउटसाइडर्स, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि बिल्कुल पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मीन्स उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल ही कहीं ना कहीं आइसोलेट होते जा रहे हैं वो. तो ये होता है. ठीक है, then the other features of Indian society are coexistence of traditionalism and modernity. So that is why our society is called as semi modern. Indian society as a whole अभी भी पूरी तरीके से modern नहीं हुई है. modern मतलब the values that you have adopted from the western world, USA या European values जो आपने adopt करी हैं अपने culture में वो modern values कहलाती है. तो we are still a semi modern society. तभी कहा जाता है कि we are a semi modern society because of existence of traditionalism and modernity at the same time. ट्रेडिशनलिज्म क्या कर रहा है, इट इज़ अपहोल्डिंग और मेंटेनेंस ऑफ द कोर वैल्यूज जो इंडिया की है. ठीक है, कोर वैल्यूज. वेयर एज मॉडर्निटी रेफर्स टू क्वेश्चनिंग द ट्रेडिशन एंड मूविंग टुवर्ड्स रैशनल थिंकिंग, सोशल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. ओके, बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करता है. मेंटेन अ फाइन बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म. मटेरियलिस्टिक नीड्स मतलब जो आपके बॉडी की या जो आपके कंज्यूमरिस्ट मेंटालिटी की जो नीड्स है वो मटेरियलिस्टिक नीड्स होती हैं. स्पिरिचुअलिज्म इज द you can say a theory to attain inner peace. Okay, wherein you are not attracted towards material needs
and you more believe more in having inner peace and inner strength. That is called as spiritualism. And we in our society as a whole have maintained a kind of a balance between spiritualism and materialism. Spiritualism main focus is to promote an individual's experience with God, or you can say a kind of an inner peace kind of a situation. Materialism is a tendency to consider material possessions and physical comfort as more important than spiritual values. So materialism का होता है material possessions हो, हमारे पास ज़्यादा luxury के items हो, luxury car हो, luxurious house हो, luxury चीज़ें हो, हमारे पास commodities हो, ज़्यादा physical comfort हो, वो materialism में आ जाता है. And when you are above all this and you just seek peace with yourself and your God, then that is called as spiritualism. तो in India there is a balance between both these things. ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग spiritual है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग materialistic है. They have kind of maintained a balance between both the things. Balance between individualism and collectivism is also one feature of Indian society. Individual is a moral, political, or social outlook that stresses human independence, self reliance, and liberty, whereas collectivism is the practice of giving a group priority over each individual. There exists a fine balance between them in the Indian society. Okay. Now, what are the other features of Indian society? Caste system. If you are studying about Indian society, you cannot ignore the concept of caste, because caste plays a very major role in our society, not just in our society, even in Indian politics, caste plays a major role. Okay, so now we will study about what is caste and what is its effect, political, social, and economic effect on the Indian society. So, what is caste? It can be defined as a hereditary endogamous group which is having a common name, common traditional occupation. Like, for example, you may belong to Brahmin caste or you may belong to Rajput caste. This is caste identities. You may belong to the Dalit caste. Okay, relatively rigid in matters of mobility. That is, it's very difficult for you to change your caste if you are born in a particular caste. तो ये जो मोबिलिटी का फैक्टर होता है बहुत रिजिड है इंडियन केस में. ठीक है. डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ स्टेटस एंड फॉर्मिंग अ सिंगल होमोजेनस कम्युनिटी. सम फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इंक्लूड सेगमेंटल डिवीजन होता है सोसाइटी का ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इंडिया में. इट मीन्स दैट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज लार्जली बेस्ड ऑन कास्ट. मेंबरशिप जो होती है कास्ट ग्रुप की, इट इज एक्वायर्ड बाय बर्थ ऑन द बेसिस ऑफ विच पीपल आर रैंक्ड इन रिलेटिव टू अदर कास्ट ग्रुप्स. That if you are born in this particular caste, you are a higher caste member, you are a higher, you will be considered, you will be given better treatment in the society. If you are born in some lower caste group, then you will be facing discrimination in the Indian society. कितना ही उस चीज़ को हम ignore कर दे, but it's a reality that there is a lot of difference, there is a lot of discrimination which happens with lower caste people in this country till now. So जिस भी आप एक कास्ट में बिलोंग करते हो, इट इज डिसाइडेड बाय बर्थ एंड योर स्टेटस इन द सोसाइटी समहाउ. द स्टेटस इन द सोसाइटी इज डिसाइडेड relative to the other caste groups in the society as a whole. Then एक hierarchy वाला feature भी है कि indicates that various castes are categorized according to their purity and impurity of occupations. Okay, like for example, जितना मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला और जितना भी ये लो लेवल क्लीनिंग के जॉब्स होते हैं, वो सारे ऐसा अंडरस्टूड है कि हाई कास्ट पीपल विल नॉट बी इन्वॉल्व इन सच ऑक्यूपेशंस, बिकॉज इंडिया में फ्रॉम टाइम मेमोरियल ऐसा कल्चर, ऐसा एनग्रेव्ड हो गया है ये कल्चर इंडिया सोसाइटी में कि जो ऑक्यूपेशंस हैं वो कहीं ना कहीं जो आपकी सोसाइटी में जो आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग एक हायरार्की सेट हो गई है. कास्ट के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन की एक हायरार्की सेट हो गई है कि जितने भी वेल पेड जॉब्स हैं या जितने भी क्लीन जॉब्स हैं, दे आर ऑक्यूपाइड बाय हाई कास्ट पीपल मोस्टली. एंड जितने भी लो कास्ट पीपल हैं, दलित्स हैं या जो SC STs हैं ऑल सच अदर ट्राइबल ग्रुप्स हैं या इवन जो अदर बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो उनको जो काम दिए गए हैं हमेशा से सोसाइटी में वो लोअर लेवल या लो पेड जॉब्स दिए गए हैं या मैनुअल स्कैवेंजिंग टाइप के जॉब्स उनको दिए गए, क्लीनिंग के जॉब्स उनको दिए गए. इस टाइप के जो लो लेवल पेड जॉब्स हैं, क्लीनिंग के जॉब्स है, मैनुअल स्कैवेंजिंग इज़ अ वेरी टॉर्चरस काइंड ऑफ अ जॉब कि आपको उसमें बहुत सारा सीवेज का क्लीनिंग एंड ये सारे टाइप की क्लीनिंग के जॉब्स करने होते हैं. तो इनमें आप मोस्टली फाइंड करोगे, यू विल फाइंड दैट द लोअर कास्ट पीपल आर इन्वॉल्व इन सच लो पेड जॉब्स. तो ये एक हायरार्की मेंटेन हो गई है कहीं ना कहीं इस इंडियन सोसाइटी में. सो इवन इफ अ पर्सन वांट्स टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज ऑफ लाइफ एंड डजंट वांट टू परफॉर्म ऑक्यूपेशन ऑफ इट्स फोर फादर्स, he cannot do so because that system is established in the society
एंड ही कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट ऑक्यूपेशन. अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग सपोजली एक ग्रुप में एक कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको वो चीज़ नहीं करनी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लीव देयर फैमिली ऑक्यूपेशन, बिकॉज उनके कास्ट के अकॉर्डिंग उनकी फैमिली का वही ऑक्यूपेशन रहा है. देयर फोर फादर्स हैव बीन डूइंग द सेम लो पेड जॉब्स, तो उनको भी वही करना पड़ता है इवन इफ दे डू नॉट वांट टू डू दैट. तो ये एक तरीके का सिस्टम ऑफ हायरार्की सेट हो गया है बेस्ड ऑन योर कास्ट, लो कास्ट और हाई कास्ट. देयर आर सर्टेन ऑक्यूपेशंस ऑफ आवर सोसाइटी which have been divided based on the caste in which you belong. Like for example, ज़्यादातर जो टेलर के जॉब्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग करते हैं, ठीक है. और ऐसे ही जो हेयर कट का काम होता है, सैलून का काम होता है, वो ज़्यादातर हमने एक दूसरे कास्ट के लोगों को ज़्यादातर उनको असाइन कर दिया है कि मेजर सेक्शन जो एक होता है जिसको आप कहते हो नाई, तो नाई का एक वो अलग है. हाँ, हर एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को कहीं ना कहीं एक कास्ट आइडेंटिटी से जोड़ दिया गया है इस कंट्री में, ठीक है. देन सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज बहुत होती है इंडियन सोसाइटी में, ठीक है. लोअर कास्ट ग्रुप्स दे हैड नो एक्सेस टू वेल्थ, दे वर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एंटरिंग टेम्पल्स एटसेट्रा. तो इस तरीके का इनके सिविल एंड रिलीजियस यू कैन से डिस्क्रिमिनेशन और डिसेबिलिटीज अभी भी एट प्रेजेंट. इट्स नॉट दैट द लोअर कास्ट ग्रुप अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई रैंक गेन कर लिया इंडियन सोसाइटी में, नहीं. कहीं ना कहीं द लोअर कास्ट ग्रुप्स आर स्टिल फेसिंग लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सिविल डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इन आवर कंट्री. So that's a reality and it's a feature of Indian society. Endogamy होती है. Members of a particular caste they have to marry within their caste only. Intercaste marriages कहीं ना कहीं अभी भी prohibited है Indian society में, ठीक है. Untouchability का है एक बहुत ज़्यादा. Manual scavenging एक बहुत harsh reality है Indian society की, कि manual scavenging जो होती है like सीवरेज क्लीन करने का काम होता है, बहुत सारे जो लो लेवल के बिल्कुल ही हजार्डस सिचुएशन में जो क्लीनिंग के काम होते हैं उनको आप मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हो. टनल क्लीनिंग, सीवरेज क्लीनिंग एंड ऑल सच थिंग. इट बिकम्स अ कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन, ठीक है. इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम बकेट टॉयलेट्स एंड पिट लैट्रिन्स. तो जो आपके ओपन डेफिकेशन में जो चीज़ें होती है उसको उठाने का काम, ये सारी ह्यूमन एक्सक्रीटा को उठाने का काम, और ये सारे जितने भी लो लेवल के जॉब्स होते हैं ये किसको दिए जाते हैं, कास्ट बेसिस पे ही असाइन किए जाते हैं. It has been officially abolished by the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act. Okay, caste-based violence बहुत होता है इंडिया में. Increasing trend of caste-based violence that are related to instances of intercaste marriage and assertion of basic rights by Dalit, including land rights, freedom of expression, access to justice, access to education. So whenever like lower class people they start protesting and they started demanding equality for themselves in the Indian society, whether they are demanding any kind of land rights or freedom of expression for them, they always have to face caste-based violence by the majoritarian groups. They always have to face caste-based violence by the majoritarian groups. Majoritarian groups means those people who are in majority belonging to higher caste. तो इस तरीके के जो low caste, high caste लोगों के बीच में violence होता है, that is also a very regular phenomenon in our country and they are many times related to instances of intercaste marriage and all also. ठीक है. अब ये कास्ट का ही एक डायमेंशन हमने एंडोगमी पढ़ा था कि एंडोगमी इज रिलेटेड टू कास्ट ओनली, दैट members of a particular class caste have to marry within their caste. Okay. देन पॉलिसी ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, हमें पता है इंडिया में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में सबसे बड़ा फैक्टर ही कास्ट होता है, ठीक है. सिस्टम ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन इंडिया कंप्राइजेज अ सीरीज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन मेजर. जो रिजर्वेशन का एक पॉलिसी होता है दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर अफर्मेटिव एक्शन, ओके, वेयर इन गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी to uplift them so that वो they come in par with the other section of the society. Okay, reservation जो होता है access to seats in various legislatures or to government jobs or the enrollment of higher educational institutions. Such caste based reservation is forms part of your affirmative action. Okay. Now, what are the changes in the caste system that have taken place over the period of time in our country? That is, the trends for intercaste marriages have increased. There are many groups who are challenging the orthodox views of our society or superstitious views of our society. New food habits have developed. Changes in occupation have taken place. That it's not that ये जो पहले एक मोबिलिटी होना, एक दूसरे ऑक्यूपेशन से तीसरे ऑक्यूपेशन में जाना बहुत डिफिकल्ट था. इफ़ यू आर दैट पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन इज असाइंड टू योर कास्ट आइडेंटिटी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट इन द पास्ट, बट नाउ कहीं ना कहीं वो एक मोबिलिटी बढ़ गई है एंड पीपल they change or switch over to jobs as and when they get new opportunities. Okay,
Then improvement हुआ है in the position of lower caste also. There are lower caste also people we see that उनका भी representation होता है कहीं ना कहीं politics वगैरह में बढ़ गया है lower caste लोगों का, and their influence in the society, their voice in the society has increased over the period of time. ठीक है. Now, what are the factors which are affecting these changes in the caste system? First is the Sanskritization. As a process of change is the mobility concerned with positional change. By changing the customs and rituals, such as by adopting vegetarianism or Platonism, people belong to lower caste. They are also claiming a higher position in the caste hierarchy. Sanskritization means they are more and more जो low caste people हैं, they are leaving their own cultural identity, that they are now adopting new customs and rituals so that they can claim that they are like the higher castes in the society. Like for example, जितने भी higher caste groups होते हैं, they are normally vegetarian, they do not prefer eating non-veg. So these people, they will also adopt such food habits and such living lifestyles to claim higher position in the caste hierarchy of Indian society. फिर westernization जो हो रहा है, that is also one major factor behind the changes in the caste system that have taken place due to changes in the spheres of education, food habits जो हम कहीं ना कहीं we are copying or imitating the West in our education scenario. Also regarding our food habits, we are copying द वेस्ट वेस्टर्न सोसाइटीज़. तो जब हम वेस्टर्न सोसाइटीज़ को कॉपी करते हैं, वेस्टर्न सोसाइटी में कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा डीपली एनग्रेव्ड नहीं है लाइक द वे द कास्ट सिस्टम इज एनग्रेव्ड इन इंडिया. तो जब हम वहाँ के फूड हैबिट्स को फॉलो करते हैं, एजुकेशन सिस्टम को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि जो कास्ट रिजिडिटीज़ इंडिया में है वो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बाहर की सोसाइटीज़ में वैसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर फूड हैबिट्स है तो आप लोअर कास्ट पीपल को ही असाइन करोगे, ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज़ नो बैरियर एज फार एज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पैरामीटर्स आर कंसर्न. वो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हमें यही सिखाते हैं, ठीक है, कि जो फूड हैबिट्स होती हैं, ड्रेसिंग सेंस होता है, स्टाइल ऑफ ईटिंग या मैनर्स होते हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द कास्ट इन विच यू बिलोंग. तो कहीं ना कहीं जो कास्ट के बैरियर्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं व्हेनेवर एक वेस्टर्नाइजेशन होता है सोसाइटी का, बिकॉज पीपल आर अडॉप्टिंग more and more modern and rational views. People are adopting more and more modern and rational views to live in the society, and that is why they are breaking the chain of that caste rigidity जो present है इंडियन सोसाइटी में. तो जो वेस्टर्नाइजेशन होता है, हम वेस्टर्न वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं. वेस्टर्न वैल्यूज़ यही सिखाती हैं कि योर लिविंग स्टैंडर्ड मस्ट बी बेस्ड ऑन रैशनल वैल्यूज़. रैशनल वैल्यूज़ मीन जो कास्ट और ऑर्थोडॉक्स रिलेटेड जो व्यूज़ होते हैं, ये कास्ट बेस्ड व्यूज होते हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू एनी योर लिविंग स्टाइल, वेदर इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, फूड हैबिट्स और एनीथिंग, दैट मस्ट नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कास्ट रिजिडिटीज, बट यू मस्ट फॉलो मॉडर्न एंड रैशनल आइडियाज. तो वेस्टर्नाइजेशन से बहुत फर्क पड़ा है, ठीक है. मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस primarily relies on scientific outlook, rational attitudes, high social mobility, mass mobilization and specialization in work. Okay. फिर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन से भी बहुत फ़र्क पड़ा है कास्ट इंडियन सोसाइटी के ऊपर. विथ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन्स एंड सिटीज, माइग्रेशन हैज़ स्पायरल्ड अप, एंड व्हेन पीपल माइग्रेट दे मूव टू न्यू प्लेसेस, दे मीट न्यू पीपल एंड दे एक्सप्लोर न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो और ज़्यादा सोशल मोबिलिटी जो होती है वो बढ़ती है. जब सोशल मोबिलिटी जो बढ़ती है तो जो कास्ट के रिजिडिटीज़ थे रूरल एरियाज़ में या अदर बैकवर्ड एरियाज़ में, जब वो लोग वहाँ पे रहते थे, वहाँ की सोसाइटी कंडीशंस बहुत डिफरेंट होती हैं. रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में जो लिविंग स्टाइल है, जो वैल्यूज़ हैं लोगों के रहने की, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. So when as a result of industrialization and urbanization, people move to better places, people move to cities and towns, there they see that जो social values हैं वो बहुत different है. Caste then doesn't play that much role the way it played whenever they were living in the backward areas of the country. तो जब वो better areas में move करते हैं in search of better economic opportunities, जो कि हुआ है industrialization and urbanization के through, then they realize that caste, they have to give up on their caste rigidities and they have to accept new ideas for living life. Okay. फिर democratic decentralization से भी caste पे बहुत फर्क पड़ा है. Reservation which is being provided to panchayati raj systems, that has given the opportunity for the lower caste also to empower themselves, because they get a chance for political representation जो कि पहले के टाइम पे उनको नहीं मिला. तो कहीं ना कहीं if you are giving power to the hands of the lower caste, then that will lead to their empowerment. Okay. Caste and politics. Now first you have to understand that these जो अभी तक हमने पढ़े, these are the social effects of the caste system. ठीक है, कि social effects क्या हैं. अब उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिटिक्स है हमारी कंट्री में, इंडियन पॉलिटिक्स, हाउ फार इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द कास्ट सिस्टम. So if you have to understand this fact that caste and politics are very closely linked to each other in India,
Link has led to an empowerment among the lower caste since they ventilate their feelings through elections, and also they have established their own power lobbies. So various caste groups have established their own power lobbies, and this has somehow the जो link है, it has got both effects, negative consequences also. जो interlinkage है caste and politics का इंडिया में, that has got both the kind of manifestations. Positive effect भी है इस linkage के and negative effect भी है. Positive effect ये है कि since lower caste people have got a voice now in the and they have got representation in the Indian politics through the democratic decentralization, now they are affecting and they are showing their feelings towards the other section of the society through elections and forming their own power lobbies. They are showing that we are also a section of the society and we can influence the voting patterns, we can influence the situation of politics in the country. So lower caste people, they have also got a say in the politics of the country through the linkage between this caste and politics situation. ठीक है. फिर उसके बाद द रिलीजियस प्लूरलिज्म, इट इज़ ऑल्सो वन फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी दैट देर आर डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हु आर लिविंग इन इंडिया. Though it is a secular country comprising various religions of the world, which are further subdivided into several sects and cults also. It's not just a simple plain religious groups है, उनके several subsects या sub cults भी हैं. So religion in India, it is characterized by a diversity of religious beliefs and practices. Indian subcontinent is the birthplace of four world religions, means they are not just confined to India. They are practitioners of these religions even in other parts of the world like Hinduism, Buddhism, Sikhism and Jainism. Further variants of Hinduism जो होते हैं Vaishnavism, Shaivism etc. is practice. So आप इनको कह सकते हो ये एक तरीके से सब sects हैं Hinduism की. Even in Islam, multiple variants Shia, Sunni tenets are followed. Animistic and naturalist religions are also followed by tribal groups. Thus, there is a plurality of multiple religions, and each religion has individual salient tenets and associated festivals and customs with its own religion. Now we will study in detail the role of caste in India in Indian politics, that what role caste system plays in the Indian political situation. Okay. So first of all, to start with, caste जो है इंडिया में, that is a caste in contemporary Indian politics. It plays a contemporary, that is present Indian politics. It plays a very important role behind the facade of parliamentary democracy. It is so tacitly and so completely accepted by all that it is everywhere. Okay, political जो behavior है people का, that is very much influenced by caste considerations, and it is quite evident at the time of distribution of election tickets. जब भी election tickets का distribution होता है तो कोई भी political party keeps in mind that कौन से dominant castes हैं उस particular area में, और वो जो dominant castes होंगे, जो जिस तरीके से distribution है castes का, dominance जो है उस particular area में, जिस भी caste का dominance होगा वहाँ के लोगों को ज़्यादा election के tickets मिलते हैं, so that कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में जाए वोटिंग का जो रिजल्ट है. ओके, एंड कॉम्पोजिशन ऑफ मिनिस्ट्रीज इज ऑल्सो डन. कास्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू इन्फ्लुएंस द वोटिंग बिहेवियर. इनफैक्ट वोट्स आर सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. वोट्स मांगे जाते हैं इस कंट्री में कि हम आप इस पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं, आपका अगर कोई कैंडिडेट उस कास्ट का है, सो ही विल सीक वोट्स फ्रॉम द पब्लिक ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ओनली. ओके, and while selecting a candidate for a particular constituency, then also it is calculated that whether he will be or she will be able to get the support of his or her caste or not. So with the अगर largely देखा जाए so our politics is secular, कि हम secular values promote करते हैं, but जो style है that is essentially casteist only. So that's a reality. In a wide range of social and economic activity, whether it is in admission to schools and colleges, or it is in student politics, in employment opportunities, in the distribution of benefits based on discretionary power in the three पंचायती राज. हमें पता है कि पंचायती राज जो एक्ट्स है उसमें बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हैं जो कि कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है पंचायती राज को फॉलो करने के लिए. लेकिन अगर पंचायती राज को स्पिरिट में फॉलो करना है तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इवन दोज डिस्क्रिशनरी पावर शुड बी फॉलोड इन फुल स्पिरिट. बट टू गिव द बेनिफिट्स विच आर बेस्ड ऑन दिस डिस्क्रिशनरी पावर्स, इंडिया में कास्ट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है उस केस में. ठीक है, इवन इन ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस caste considerations play more than a marginal role. No account of voting behavior, legislative proceedings, or even ministerial appointments would be complete unless considerable attention is given to this factor of caste in the Indian politics situation. Okay, तो आपको अंडरस्टैंड कि इलेक्शंस भी इन्फ्लुएंस होते हैं, वोटिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है,
हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, जहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है किसी कम्युनिटी के ग्रुप के बच्चों को स्कूल में या कॉलेजेस में, या स्टूडेंट पॉलिटिक्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑल आर very much influenced by caste considerations in our society. So not just politics but these other factors और जितने other spheres हैं, economic activity, social activity, वो भी caste से बहुत ज़्यादा influenced है. Now the next topic we will be taking up is the role of family in the Indian society. इसमें पढ़ने जैसा या समझने जैसा कुछ नहीं है. Everybody knows the value of family, characteristics क्या होते हैं family के, क्या है वो सब आप अच्छे से पढ़ लेना कि families जो है is the basic unit of the society. First and the most immediate जो social environment होता है to which the child is exposed is the family only. That is why इतनी value होती है family की कि the family it is in the family that the child will learn the language, बिहेवियरल पैटर्न्स कैसे फॉलो करने, लाइक फॉर एग्जांपल जो वैल्यूज़ फैमिली की हैं वही सेम वैल्यूज़ इम्बाइब करता है एक चाइल्ड भी. सो दैट इज़ वाई फैमिली प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन द इंडियन सोसाइटी इन शेपिंग behavior of an individual in the Indian society. Its immediate family will play the most important role. Okay, ये सारी चीज़ें होती हैं. फैमिलीज, ट्राइबल, रूरल एरियाज, अर्बन कम्युनिटी सब में लाई करती है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फैमिली का, डेफिनेशन क्या है फैमिली की, वो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है, इसमें इट्स नॉट द वेरी बिग थिंग. अब ऑन टाइप्स ऑफ फैमिली आप पढ़ सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज पॉलीगमस फैमिलीज होती हैं इन विच द आइदर स्पाउस इज अलाउड टू हैव मोर देन वन स्पाउस. मोनोगमस फैमिलीज होती है जिसमें मैरिज लिमिटेड टू वन स्पाउस. फिर ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस कैसे फैमिलीज होते हैं, पैट्री लोकल फैमिलीज होते हैं, मैट्री लोकल फैमिलीज होते हैं, ठीक है, बाय लोकल फैमिलीज होते हैं. अब ये जितने टाइप के फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस उनको डिटेल में आप पढ़ सकते हो. इसमें इतना कुछ ये नहीं है कि अलग से समझाने वाली कोई चीज़ है, इट्स जस्ट फैक्चुअल डिटेल्स. तो वैसे आपको ब्रॉड वे में पता होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस 3 टाइप के फैमिलीज डिफाइंड है इन द इंडियन सोसाइटी. ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज कितने टाइप के फैमिलीज डिफाइंड है. तो ये एक टाइप का एक ब्रॉड आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर वी नो न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं, जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिलीज होते हैं, ठीक है. जॉइंट फैमिली में क्या होता है, इट इंक्लूड मेंबर्स फ्रॉम 3 to 4 generations. It's an extension of parent-child relationship. It is based on close blood ties. It is like the joint family of the Hindu society. On the basis of authority, patriarchal families होती है, in which all the power remains in the hands of patriarch or father. He owns family property. Matriarchal होता है इसमें, it is just opposite. So the type of families found among the Nayars of Kerala and among the Garo and Khasi tribes of Assam, wherein they give importance to the फीमेल मेंबर, और यू कैन से जो फीमेल हेड होती है सोसाइटी उनके फैमिली की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. दैट इज कॉल्ड एज अ मैट्रियार्कल फैमिली. ओके, ना फैमिली और इस टाइप के कल्चर जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नायर्स ऑफ केरला या अमंग द गारो एंड द खासी ट्राइब्स ऑफ असम. सो वी नो दैट दिस फैमिली का जो एक यूनिट है या फैमिली की जो वैल्यूज़ है वो हर जगह एक्सटेंडेड है इंडिया में, वेदर इट इज़ अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स, वेयर इट इज़ अमंग द वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स. तो मैट्रियार्कल फैमिली वो होती है जहाँ पे ज़्यादातर मदर के साइड के लोगों का ज़्यादा डोमिनेंस होता है, ठीक है. नो फैमिली ऑन द बेस ऑफ डिसेंट होती है पैट्रीलिनियल फैमिली, इन विच डिसेंट और एंसेस्ट्री मैट्रीलिनियल फैमिली इज जस्ट ऑपोजिट टू दैट. फंक्शंस क्या हैं फैमिली के, प्रोड्यूसिंग एंड रियरिंग, प्रोविजन ऑफ होम, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन जो होता है वो फैमिली के थ्रू ही एक चाइल्ड को दिया जाता है. एजेंट होता है सोशलाइजेशन का, किस तरीके से एक आपको सोशलाइजेशन करना है, वेदर अमंग द फैमिली और आउटसाइड द फैमिली. एक जो एक्सपोजर मिलता है चाइल्ड को वो कहीं ना कहीं फैमिली में ही मिलता है, ठीक है. स्टेटस डिस्क्राइबिंग फंक्शन एंड फैमिली इज ऑल्सो एन एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल. सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं, एजुकेशनल फंक्शन होते हैं, ठीक है. फैमिली प्रोवाइड्स बेसिस फॉर चाइल्ड फॉर्मल लर्निंग. देन रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, इट इज़ अ सेंटर फॉर रिलीजियस ट्रेनिंग ऑफ द चिल्ड्रन. की जो भी आपने के फैमिली का रिलीजन होगा वही कहीं ना कहीं रिलीजन आप अडॉप्ट करते हैं. यू हैव द फ्रीडम टू चेंज योर रिलीजन इन दिस कंट्री, बट जनरली हम वही रिलीजन अडॉप्ट करते हैं, वही प्रैक्टिसेस, वही वैल्यूज अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है. फिर रिक्रिएशनल फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन चेंजेस क्या हुए हैं इन द इंडियन फैमिली सिस्टम. Instead of all the members working together in an integrated economic, a few male members go out of the home to earn the family's living. These affected family relations. ठीक है. Influence of urbanization हुआ है, various sociologists have revealed that city life is more favorable to small nuclear families than to big joint families. Okay. जो सिटी लाइफ ऐसा बोलते हैं कि स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, जो बिग जॉइंट फैमिलीज है वो ज़्यादातर अभी भी रूरल एरियाज में ही रहते हैं. लेजिस्लेटिव मेजर्स, ठीक है. चेंजेस इन मैरिज सिस्टम हैव टेकन प्लेस. ओके, फ्रीडम इन मेड सिलेक्शन है. अब ऐसा नहीं है कि ओनली योर फादर और योर इमीडिएट जो पेरेंट्स हैं वही आपके लिए आपका लाइफ पार्टनर चूज करेंगे. यू हैव दिस फ्रीडम ऑल्सो
कि आप अपना मेड सिलेक्शन कर सकते हो. Influence of Western values is seen a lot in the Indian family system. Values relating to modern science, rationalism, individualism, equality. Individualism means आप अपने human independence और अपने human free critical thinking को ज़्यादा value देते हो as far as what the society thinks. As compared to what the society thinks, your own beliefs matter more. That is called as individualism. ठीक है, equality की values को देते हो. डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ विमेन एक्सेट्रा की जो वेस्टर्न वैल्यूज है उनको हमने कहीं ना कहीं इंडियन फैमिली सिस्टम में अडॉप्ट किया है. ठीक है, एंड दैट हैज लेड टू ट्रिमेंडस चेंज इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया. Changes in the position of women have also taken place in the Indian family system, and main factor which is causing changes in the women of society is her changing economic role. जो अब इकोनॉमिक रोल ज़्यादा हो गया है, इवन द women are coming at par with the men as far as economic opportunities are concerned. They are working, their living standard has improved because उनके पास भी अब jobs ज़्यादा बेहतर तरीके से हैं, and they are also having freedom for education and other such things. तो ये जो change हुआ है position of women में, that has happened because women का over the period of time India में economic status improve हुआ है. ठीक है, then we will study about the value of diversity in India. So we know that India is a plural society both in letter and in spirit, and it is rightly characterized by its unity and diversity. Okay, हमारे country में एक synthesis है cultures का, religions का, languages का, लोगों का, ठीक है, of different castes and communities. But still these different castes and community people, they have held the unity and cohesiveness despite the multiple foreign invasions. Okay, national unity and integrity maintain करी हुई है through sharp economic and social inequalities that have obstructed the emergence of egalitarian social relations, but still we have maintained that spirit of national unity and integrity in our country. And what it means collective differences, that is differences which mark off one group of the people from the other. These differences could be of any type, biological difference भी है, religious, linguistic differences भी है हमारी country में. But the term diversity emphasizes differences rather than inequalities. Term diversity अगर हम बात करते हैं, that doesn't show that inequality है society में. It shows कि बहुत सारे different views and different religious और cultural और linguistic groups के लोग रह रहे हैं. तो diversity could be any kind of diversity, religious diversity, linguistic diversity भी होती है. There could be different people belonging to different linguistic groups भी, biological diversity भी होती है. Unity क्या होती है? Unity means integration. So it's a social psychological condition. It connotes a sense of oneness, a sense of we-ness. It stands for the bonds which hold the members of a society together. Unity in diversity essentially means unity without uniformity and diversity without fragmentation. Okay. Now various forms of diversity in India, religious diversity है, linguistic diversity है, there are a lot of groups which are based on different kind of languages they speak. Racial diversity भी है इंडिया में, हमारे कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के लोग रिसाइड करते हैं. ठीक है, कास्ट डाइवर्सिटी तो है ही, कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है. ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जोग्राफिकल टेरेंस इन आवर कंट्री. देन फैक्टर्स जो है जिन्होंने इस चीज़ को मेंटेन करा है कि इवन आफ्टर सो मच ऑफ डाइवर्सिटी देयर इज स्टिल अ सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड इंडियननेस एंड वननेस इन आवर कंट्री. यू कैन सी द स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है वो क्यों है. Values of coexistence है इंडिया में, that has developed as a result of historical fusion also and accommodation since most of the conquerors like Mughals they had settled in India itself. हमने देखा बहुत सारा spirit है किस चीज़ का, assimilation and accommodation का, that people even foreign जो invasions हुए थे और conquerors थे, they eventually got assimilated and accommodated themselves in the Indian ethos only. Okay, that is one factor की जो एक value of coexistence है हमारे इंडिया में, that is the reason behind so much of unity and diversity. Then Indian national movement has also played a major role to promote this spirit of unity. Rule of Congress जो था, such as meetings shall be held in different part of the nations, British railways, okay, telegram वगैरह की facilities, Indian press, major movements like non-cooperation and all, they led to the development of an Indian identity apart from other various sub-identities and much powerful than other sub-identities, and that is one link or Indianness which has still bound our section of societies. Values जो espoused है हमारे constitution में, they also are promoting the spirit of unity and integrity. They have protected the growth of majoritarianism in the nation. Majoritarianism is a टेंडेंसी कि जहाँ पे जो मेजॉरिटी है, रिलीजियस ग्रुप जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है या मेजॉरिटी में है उसकी चलेगी. ऐसा नहीं हो पाया हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं.
बिकॉज जो वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दे प्रोहिबिट दिस फ्रॉम हैपनिंग. ओके. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन मेथड जो हुआ था बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ द माइनॉरिटीज ऑफ दिस कंट्री somehow have led to the spirit of unity in the country कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो माइनॉरिटीज है उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया है ड्यू टू वेरियस वेलफेयर मेजर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. फिर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई थी उसके थ्रू लैंग्वेज के थ्रू बहुत सारा डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स हैव बीन फॉर्म टाइम एंड अगेन. तो कहीं ना कहीं जो रीजनल एस्पिरेशंस भी हो रही हैं कि बेस्ड ऑन लैंग्वेज और अदर आइडेंटिटी देर आर द वेरियस रीजनल ग्रुप्स हु हैव कम अप एंड स्प्रैंग अप and they are demanding their own demands. So कहीं ना कहीं government listens to the views of the minorities and such demands also. उसकी वजह से भी वो spirit और वो balance कहीं ना कहीं अभी तक बना हुआ है. ठीक है. फिर what is about Indian cultural diversity? So Indian cultural diversity, Indian culture is one of the oldest and unique. Okay. This is a fact that Indian culture is one of the unique and oldest cultures. Few countries in the world have such an ancient and diverse culture as India's. In India, there is an amazing cultural diversity throughout the country. South, North, Northeast, they have got their own distinct cultures. Almost every state has carved its own cultural niche. Its physical, religious, racial variety is as immense as its linguistic diversity. Underneath this diversity lies the continuity of Indian civilization and social structure. India is a vast country with a variety of geographical features and climatic conditions. Infinite variety, fascinating. Okay. Factors which lead to unity amidst diversities in India is constitutional identity because the entire country is governed by one single constitution and its own common values. Religious coexistence है एक आप उसके पीछे का रीज़न बता सकते हो. एक religion tolerance है इंडिया में. एक the unique feature of the religions in India because each of the religions which we are follow whether it is Buddhism, Jainism ये सब tolerance की और compassion की spirit को promote करते हैं. They are teaching you to be how to live in harmony with the other religious groups also, and that is why there are multiple religions who are coexisting peacefully in our country. So freedom of religion and religious practice जो है जो guarantee करी है constitution ने that also plays a major role. Okay. Moreover, there is no state religion and religions are given equal preference by the state. Okay. कोई हमारा एक official religion नहीं है. ठीक है. Interstate mobility is also one the reason. Constitution guarantees freedom to move throughout the territory of the India so that we are able to understand that कितनी ज़्यादा diversity है and we are able to adopt to that fact. Okay. And कोई restriction नहीं है कि एक particular religious group या एक particular state के लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते. इस टाइप के अगर आप restriction लगाते हो तो कहीं ना कहीं it affects the unity of the country. Other factors such as uniform pattern of law, penal code या administrative जो works हैं they have all led to uniformity. एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी है. ठीक है. कहीं ना कहीं बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर्स द फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स ऑल्सो. ठीक है. इंस्टीट्यूशन ऑफ पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी हैं. रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी है दे हैव गॉट ग्रेट सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री. ओके. Fairs and festivals are also one major way of promoting this unity and diversity of in our country because they act as integrating factors. As people from all the parts of the country celebrate them as per their own local customs. Like for example, अगर अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रे will be celebrated in its own different color and flavor in the for example in West Bengal, whereas it will be celebrated with different color and flavor for example in Rajasthan और गुजरात क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गरबा एंड दूसरे टाइप के जो ट्रेडिशंस है उनका ज़्यादा प्रेवलेंस है. बट दैट वननेस इज स्टिल मेंटेन. दैट फेस्टिवल तो सेम है, सेम टाइम पे होगा, उसकी जो स्पिरिट है वो सेम है. दो में इट मे बी सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द ओन लोकल कस्टम्स ऑफ वेरियस स्टेट्स. बट वो ये जो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स है कहीं ना कहीं दे आर बाइंडिंग दी ऑल दी अदर स्टेट्स विद ईच अदर बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आर सेलिब्रेटिंग द सेम फेस्टिवल दो विथ अकॉर्डिंग टू देयर ओन लोकल कस्टम्स. सो एक तरीके का एक बाइंडिंग फैक्टर होते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स. ओके. तो ये है. Then factors that threaten India's unity are regionalism. Okay, when we have in detail studied about this problem of regionalism in our country, whereas the regional issues they become more important than the national issues. वो पूरा हमने पढ़ा है. So this is one factor which is affecting or threatening India's unity. और आप कह सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी. जैसे रीजनल इश्यूज जब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप कहीं ना कहीं नेशनल की सोवेनिटी या जो पीस है वो अफेक्ट होता है. दैट इज़ रीजनलिज्म. जैसे हम देखते हैं कि कई बार बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया विच आर डिमांडिंग अ सेपरेट कंट्री फॉर देमसेल्व्स बेस्ड ऑन देयर नागा आइडेंटिटी.
So you cannot do that. You cannot show secessionist tendencies, or you cannot do anything which affects the sovereignty and integrity of India based on your regional identity, a regional or linguistic demand. Okay, so that is this features are called as regionalism and they threaten India's unity, जो कि अभी भी present है. बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं अभी भी एक्टिव हैं जो डिफरेंट स्टेटहुड या डिफरेंट टेरिटरी की डिमांड कर रहे हैं एट प्रेजेंट इन इंडिया. सो दैट इज फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म. Divisive politics मतलब the politics which is played on the basis of caste and other religious differences. ठीक है, that is called as divisive politics, basically to divide the various sections of society by misusing their religious sentiments. Okay, then developmental imbalance भी है कहीं ना कहीं, that is also one reason to threaten India's unity. Uneven pattern of socio-economic development है, inadequate economic policies है, that causes economic disparities and can lead to backwardness of a region. Because of the backwardness of the northeast region, several instances of separatist demands have come up. So I'm really sorry. Kind of a technical glitch happened there few minutes ago. Okay, so I hope the lecture will continue. Just give me few moments. Okay, so we will continue with this. So the other factors is developmental imbalance as we were discussing. Okay, so because of the uneven pattern of the socio-economic development, that problem has arisen. And there's a lot of ethnic differentiation and nativism. We saw that developmental imbalance की वजह से कहीं ना कहीं separative demands have sprung up. That is obviously affecting the India's unity. Okay, secessionist tendencies have sprung up. Nativism and ethnic differentiation. जो ethnic differentiation has led to clashes between different ethnic groups, especially due to factors such as job competition or limited resources, threats to identity, etc. Example: frequent clashes have taken place between Bodos and Bengali-speaking Muslims in Assam. So this is one example where ethnic differences they lead to threatening the India's unity as a whole. Because if two people or two linguistic groups of people are fighting amongst each other, they are obviously affecting the peace of the society. So that threatens India's unity. Geographical isolation of the various regions of our country is also one factor that affects India's unity. Inter-religious conflicts happen. Interstate conflicts भी happen होते हैं. Like for example, interstate conflicts normally होते हैं like on the basis of
water. Like for example, a lot of interstate conflicts are still going on based on water issues between various southern states. Okay, then influence of external factors भी एक कारण होता है which affects the unity of our country. Okay, handling of diversity. Okay, problems of regionalism, communalism, ethnic conflicts जो हैं, they have arisen because the fruits of development haven't been distributed equally, or the cultures of some groups haven't been accorded due recognition, and because of that the unity is affected. ठीक है, then the obviously one reason is a rural and the agrarian society, because 70% of our population is residing in the rural